नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। जदि आपण आम चैनल को प्रथम आछन दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें भूलें। पाखे थी बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो जो उच्चस्तरीय बैठक गठन कराई चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षतार सबु विभाग कर्मचारी खुशी खबर अच्छी समस्त दाबी पूरण हो कि तो से जो आप जानते मान्यवर हाईकोर्ट को जो ऑर्डर थिला से मान्यवर हाईकोर्ट जो ऑर्डर देते वर्चुअल मोड रे जो गठित खंडपीठ मान्यवर हाईकोर्ट को ऑर्डर देते तो सही ऑर्डर आधार ये आप देखा जे अच्छा 21 जून 2024 गोटे मिसकेस नंबर जोटा कि चिठी आसला 13445 ये राजश्री सिंह जी ओएस अच्छा एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ये क्या पाक अच्छी सीओ जी अच्छा ओरमास ऑल डायरेक्टर अंडर पीआर डिपार्टमेंट ऑल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ता सहित ऑल स्पेशल सेक्रेटरी ऑल एडिशनल सेक्रेटरी ऑल ब्रांच ऑफिसर जो मैंने अच्छा डिस्पोजल ये देखो क्लीयरली मेंशन डिस्पोजल ऑफ ऑल पेंडिंग कंटेम्प्ट केसेस नॉन डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पिटिशनर इन टाउन बाउंड मैनर टू कंप्लाई विथ द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ओडिशा हाईकोर्ट। तो माननीय चीफ जस्टिस जो निर्देश देते तो से चिठी अच्छी इन इनवाइटिंग रेफरेंस टू द सब्जेक्ट नोटेड एवं आई एम डायरेक्टेड टू सेंड हियर द कॉपी ऑफ द मिनिट ऑफ द मीटिंग विथ ऑल सेक्रेटरी हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी जो समस्त सेक्रेटरी एवं चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षतार जो मीटिंग होता 21/6/2024 डेलीबरेटिव से गोटे कहुई कि फाइनालाइजेशन द एक्शन प्लान as per the direction of Honorable Chief Justice of Odisha High Court for disposal of all pending contempt cases arising out of the non-disposal of representation of petitioner for your kind reference. तो ये कहुई to say that keeping in the view of the format Google spreadsheet provided by GA/PG department for progress tracking and monitoring so as to achieve the target of disposal of all such contempt cases 15/7/2024 ताले जो समस्त जो केस कंटेम्प्ट केसेस थिला ताकू 15/7/2024 सुधा तार प्रोग्रेस केते हिची ताकू नै गोटे फॉर्मेट रे सबमिट करिवे समस्त विभाग प्रिपेयर फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन सो एज कलेक्ट डिपार्टमेंट स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर सबमिशन टू जीए/पीजी डिपार्टमेंट को गोटे वीकली टाइमलाइन फिक्स कराई जो कि फॉर्मेट फॉर रीओपनिंग कंटेम्प्ट केसेस ता सहित सब दिया जिवो आपण देखि परथुए मिनिट ऑफ मीटिंग विथ ऑल सेक्रेटरी हेल्ड ऑन 21/6/2024 जोटा कि 11:30 होता 21 तारिख रे गतकाली इन द थर्ड फ्लोर कॉन्फ्रेंस हॉल डेलिबरेटिव फाइनलाइज द प्लान फॉर एक्शन फॉर प्रपोजल ऑफ ऑल पेंडिंग कंटेम्प्ट केसेस अराइजिंग आउट नॉन डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशनर विथ 1 वीक गोटे वीक मध्य समस्त केस गुड़ाक जो डिस्पोजल होनी से कहुई आज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ओडिशा हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ओडिशा हाईकोर्ट जोटा कि 20/6/2024 गोटे वीडियो कॉन्फ्रेंस रे कहते कि appearance of chief secretary before the court had issued certain direction regarding disposal of all contempt cases which were pending for want of disposal of the representation of petitioner. It had been directed that chief secretary shall ensure disposal of all such pending contempt cases pending in the state government within a period of 1 month. जोटा कि माननीय ओडिशा हाईकोर्ट गोटे मास भितर समस्त पेंडिंग केस को डिस्पोज करने फाइनालाइज करने इन लाइन विथ द डायरेक्शन ए मीटिंग टू डिस्कस एंड ड्रॉ अपन एक्शन प्लान वाज चेयर बाय चीफ सेक्रेटरी जोटा कि 21/6/2024 होता जोटा कि सीनियर सेक्रेटरी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट जो मैंने उपस्थित थे ऑल डिपार्टमेंट वेयर रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी और द आउटसाइड चीफ सेक्रेटरी इन्फॉर्म ऑल मेंबर that Honorable Chief Justice had expressed his displeasure and concern on the huge pendency of contempt cases, the slow pace in disposal of the representation by the petitioner by the concerned official. It was informed by the Principal Secretary Law Department that more than 10,000 cases have been pending in different departments with block of case relating to school mass education
जोटा कि गणशिक्षा विभाग सहित रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट हायर एजुकेशन विभाग होम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट वाटर रिसोर्स PRDW हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ये सब डिपार्टमेंट रे पाखापाखि 10,000 रु अधिक पेंडिंग केस सब पड़ी रही इट वाज एग्री बाय ऑल दैट द सिचुएशन रिक्वायर्ड ए concerted and special effort to address this huge pendency of cases तो सही अनुसार ऑल डिटेल डिस्कशन फॉलोइंग डिसीजन वे आर टेकन ताले कौन कौन मीटिंग रे सब डिसीजन निया गला आमे एटी देखिबा तो डिसीजन ऊपर प्रथम एटी कहैछि कि ऑल डिपार्टमेंट शैल सेग्रीगेट द कंटेम्प्ट केसेस from the total contempt cases which are pending for non-disposal of representation of petitioner. This information must be prepared by respective department within next 48 hour in the format to be prescribed by GAPG department and submitted before the next meeting scheduled to be held on 24/6/2024. जोटा कि नेक्स्ट मीटिंग 24/6/2024 हम सेठी से माने गोटे प्रिपेयर करेंगे विभाग प्रत्येक विभाग को केस गुड़ा पेंडिंग अच्छी कौन सब केस पेंडिंग अच्छी कारण कौन ये सब नहीं से माने सेठी प्रेजेंट करेंगे जीए एंड पीजी डिपार्टमेंट साल सर्कुलेट ए गूगल डॉक्यूमेंट टू कैप्चर द इनफॉरमेशन जीए पीजी डिपार्टमेंट गोटे गूगल डॉक्यूमेंट देवे जोटा कि इनफॉरमेशन सब रहिबो ऑल डिपार्टमेंट वे आर डायरेक्टेड टू अपडेट द इनफॉरमेशन बाय 10 जोटा कि 24/6/2024 सुधा से माने अपडेट करेंगे चीफ सेक्रेटरी शाल रिव्यू द प्रोग्रेस मेड बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑन एवरी मंडे प्रत्येक मंडे रे चीफ सेक्रेटरी प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे ता सहित ऑल डिपार्टमेंट विल अपडेट द इनफॉरमेशन इन गूगल शीट टू बी प्रेस्क्राइब बाय जीएपीजी डिपार्टमेंट टू कैप्चर द प्रोग्रेस non-updation of information would imply zero progress by the concerned department. Each department shall also furnish a one-page minute of the action taken during the previous week, which will finally become a part of a compliance affidavit to be furnished by SCS, GA and PG department. ता सहित SCS, GA, PG department shall file the compliance affidavit on behalf of all department upon the conclusion of 1 month period. It was directed that it shall be the responsibility of the respective department to ensure that the update detail of the disposal are furnished to GAPG department well time so that their achievement are reflected in the compliance affidavit. Non-furnishing of information make department liable for being reflected in the affidavit as zero achievement. तो सही अनुसार it was informed to all officers that Honorable Chief Justice of Odisha High Court has communicated that after completion of 1 month, all defaulting officer will be directed for personal appearance and explanation by Honorable Court. जदि जो माने जो विभाग रो कर्म सचिव मान अछंती बा ऑफिसर मान अछंती से माने जदि गोटे मास भितर तांकर कौन कौन प्रोग्रेस होईची सब रिपोर्ट न देबे से माने ऑनरेबल कोर्ट रे जाई अपीयरेंस देबे बोली मध्य Honorable Chief Justice निर्देश देथिले. It was decided that to achieve goal set out the disposal of all pending representation. तो सही अनुसार डिपार्टमेंट having huge pendency may be allowed with prior permission of Chief Secretary to engage legal consultant in accordance with the guidance issued by Finance Department, Law Department. ताले Finance Department और Law Department रो गाइडेंस अनुसार समस्त जो पेंडिंग केस गुड़ा फाइनालाइज हबो ता सहित it was also decided that instead of sending the same for approval of government, considering the urgency of nature, after approval of finance department, approval of chief secretary will be sufficient for some emergent engagement of the consultant. The next meeting was fixed 24/6/2024 जोटा कि नेक्स्ट मीटिंग 24/6/2024 रे फिक्स कराई जे से दिन समस्त जो पेंडिंग केस गुड़े कौन को असुविधा रही कौन होती ताकू फाइनाल करा जिवो. ता सहित ये आप देखिपे चीफ सेक्रेटरी जे ऑर्डर बाय चीफ सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार जी अच्छा SCS, GA एंड PG डिपार्टमेंट तरफ सिग्नेचर टी अच्छी. तो यहीपर भाव में आज खबरटी जदि खबरटी आपको भल लगे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें भूलें. धन्यवाद.